हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है शौर्य एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते बच्चों। So displacement क्या होता है? Displacement is the what shortest path traveled by an object. It is a what vector quantity. तो क्या है? आपको मालूम है कि इज रिप्रेजेंटेड बाय s bar is equal to delta x bar is equal to x2 bar minus x1 bar. अरे ठीक है, मतलब क्या है बच्चों, अगर एग्जांपल मैंने कंसीडर किया कि बाबा यहाँ से एक ऑब्जेक्ट था और A स्टार्ट किया, B तक आया, B टू C तक गया, करेक्ट। सो यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि ये ट्रैवल किया 3 मीटर, ये ट्रैवल किया 4 मीटर। समझ में आ रहा है बच्चों? सो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, करेक्ट। तो आप पाइथागोरस से निकाल सकते हो ये कितना आएगा 5 मीटर, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट है, करेक्ट। अगर हम डिस्टेंस की बात करें बच्चों, तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज द डिस्टेंस? इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी। तो एक्चुअल कितना ट्रैवल किया उसने? 3 + 4 मतलब कितना? 7 मीटर। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो है डिस्प्लेसमेंट आता है दैट इज 5 मीटर, एंड जो डिस्टेंस आता है बच्चों वो आता है 7 मीटर। आए समझ में? डिस्टेंस को दूसरा नाम भी याद रखो बच्चों, कभी कभी वर्ड यूज होता है पाथ लेंथ। क्या वर्ड यूज होता है? पाथ लेंथ। आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट? एवरेज वेलोसिटी। क्या होती है एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है बच्चों, यस, टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टाइम इंटरवल अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। मतलब जिस टाइम के लिए हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, दैट टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टाइम इंटरवल अपॉन टाइम इंटरवल। तो बच्चों ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा, डेल्टा एक्स बार डिवाइडेड बाय टाइम कितना होगा? डेल्टा टी, दैट इज x2 बार माइनस x1 बार अपॉन t2 minus t1. This one is called average velocity. और आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट आया, एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ सेकंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगा बच्चों? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड का फार्मूला होगा वो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग टाइम इंटरवल अपॉन टाइम इंटरवल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? V एवरेज इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम होगा। है समझ में? दिस वन इज अ वेक्टर, दिस वन इज अ व्हाट? स्केलर क्वांटिटी। दोनों का भी यूनिट क्या? मीटर पर सेकंड। दोनों का डायमेंशन क्या? L1 T-1। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सो नाउ सी व्हाट इज द नेक्स्ट? 11 12 now see instantaneous velocity। तो क्या होती है बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? आपको मालूम है इंस्टेंटेनियस मतलब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल। कार जा रही है बाबा, कार जा रही है, अरे करेक्ट। एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेटेड ओवर द टोटल डिस्प्लेसमेंट, एंड इंस्टेंटेनियस मतलब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट जहां पे टाइम इज वेरी स्मॉल। मतलब क्या? व्हेनेवर यू हैव टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फार्मूला इज व्हाट? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बार अपॉन डेल्टा t, और आपको मालूम है दैट इज dx by dt इज कॉल्ड द व्हाट? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इज इट क्लियर? ठीक है। सो नेक्स्ट, for a uniform rectilinear motion, what is a rectilinear motion? The motion along the straight line। वो यहाँ पे आप पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जब यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन होगा तो फर्स्ट वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। Third important point, that is average speed is equal to instantaneous speed
एंड लास्ट आपको मालूम है बच्चों, एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है उसका मीनिंग क्या हुआ कि बाबा एक्सीलरेशन इज जीरो, एक्सीलरेशन इज जीरो। आया समझ में? These are the important points that you have to remember for uniform rectilinear motion. Next, now see the average acceleration. क्या होता है average acceleration? Average acceleration is equal to, बोलो, change in velocity during time interval upon time interval. So we can write delta v bar upon delta t. This is the equation for average acceleration. In short, we always write acceleration is equal to change in velocity upon time. Correct? Now what is the instantaneous acceleration? आपको instantaneous velocity में देखा, instantaneous acceleration मतलब at a particular instant, time interval is very small. So again, limit delta t tends to 0, delta v bar upon delta t, यानी instantaneous acceleration क्या होगा? It is dv by dt. करेक्ट? मतलब आप जब आता है ना displacement, when the displacement is a function of time, velocity is a function of time, at that time you are calculating the what? Instantaneous velocity and average velocity by taking the derivatives. ठीक है? Next, now see kinematic equations. We know that first equation is what? V bar is equal to u bar plus a bar into t, because these are the what? Vector quantities you have to substitute as per the sign conventions. Next one is the what? V square is equal to u square plus twice a bar and s bar, because s is the displacement. And next one is the what? Last, bolo, s bar is equal to u bar plus half a bar t square. So these are the kinematic equations. U is the initial velocity, V is the final velocity, A is the what? Acceleration. These equations are only used when the acceleration is constant. Is it clear? ठीक है. Next, now see, next is what? Distance travel in the most important condition. यहाँ पे problem बने हैं. Distance travel in the nth second of uniform accelerated motion. What is the formula? Sn is equal to u plus a by 2n minus 1. मतलब क्या? Distance travel in the 2 second, distance travel in the 4th second. So n indicates करेगा time. n in 2 seconds. So n कितना होगा? 2 होगा. U is the initial velocity, A is the acceleration. So n मतलब what? In what time interval? In 2 second, in 3 second, in the 4th second. Is it clear? ठीक है. This is important. Now next, relative velocity. Now we know that बच्चों. Suppose I am talking about the what? Velocity of A with respect to B. जो भी कुछ ऑब्जेक्ट होगा, बॉडी होगी, कार होगी. Correct? So how you can write this? VAB is equal to, बोलो, VA minus VB. So velocity is there. So vector quantity. So you have to substitute the directions. And now see, A is letter first, B is there. A minus B. If I am writing the what? Velocity of B with respect to A. So क्या बनेगा equation? VBA bar is equal to VB bar minus VA bar. So यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है बच्चों. अगर मैं कह रहा हूँ कि दोनों ऑब्जेक्ट है, करेक्ट? यहाँ पे मैं ऐसा कुछ तो ड्रॉ किया होगा, ठीक है? So both car are the what? Traveling the what? Same direction. इसका velocity है बाबा VA bar, इसका है VB bar. तो यहाँ पे मैं अगर बोलूँगा VAB, तो ये इक्वेशन as it is बनेगा VA minus VB. क्यों? दोनों का डायरेक्शन सेम. लेकिन यही बात अगर मैं ऐसे करूँगा बच्चों कि both are traveling in the what? Opposite direction. So now this is the velocity of V bar, this is the VA bar. Is it clear? Now this time what happened? So VAB bar is equal to VA bar. So यहाँ पे मैं डायरेक्शन में डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, मैग्नीट्यूड. So VAB क्या रहेगा इधर? VA minus VB रहेगा. लेकिन in this case VAB becomes VA plus VB, because ऑलरेडी साइन होता है बीच में माइनस, V जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस ऑफ माइनस.
इसलिए तो जब दो कार अपोजिट डायरेक्शन से जाती है तो हमको ऐसा लगता है बहुत फास्ट चली गई, लेकिन जब हम ओवरटेक कर रहे हैं तो हमको ऐसा नहीं लगता कि हम बाबा 90 से चल रहे हैं, बिकॉज वो साइमल्टेनियसली दूसरी कार 60 से चलती है, तो हमको लगता है हम 30 से आगे बढ़ रहे हैं। इज इट क्लियर? सो रिलेटिव वेलोसिटी न्यूमेरिकल बनता है। Is there any doubt? Correct? So this is about the what? Traveling in the same direction. This is about the what? Traveling in the opposite directions. Okay? Next one. Now see, what is the next? Two-dimensional motion. That is a motion in plane. So what in that case, what is the position vector? Position vector होता है r bar is equal to, correct? कैसे represent करेंगे हम यहाँ पे? बोलो, r bar क्या होता है? x into I cap plus y into j cap। यहाँ पे मैं 1 की बात करूंगा तो ऐसा आ जाएगा। दूसरा पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? x2 into I cap plus y2 into j cap। Position vector is a what? It is a vector which represents the position of any particle or object with respect to chosen coordinate system। With chosen coordinate system। Now see, velocity क्या होती है आपको मालूम है? We are talking about the average velocity। So average velocity क्या होगी? वहां पे हम लिखते थे डेल्टा x by डेल्टा t। तो यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा r bar upon डेल्टा t। So again we can write this equation, that is x2 minus x1 upon t2 minus t1 into I cap, and similarly we can write y2 minus y1 upon t2 minus t1 into j cap. What is this? Yes, delta x bar upon delta t into I cap. Already we are representing the what? Unit vector, so no need to give the direction. Is it clear? Plus delta y upon delta t into j cap, and this is what? Equation for average velocity. So यहाँ पे क्या represent करेगी? Average velocity in x direction plus average velocity in y direction into j cap. This is the average velocity of object in a two-dimensional motion. Okay. Now this is the equation. We have to find the magnitude and direction. So we know that what is the equation of magnitude? Magnitude of average velocity is equal to root of I cap coefficient square plus j cap coefficient square. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? V average in x square plus V average in y square. Okay. Next one, direction means what? You have to find the angle between the two velocities in x and y. So क्या होती है? Velocity, average velocity in y direction upon average velocity in x direction. So this is the magnitude and direction. We are talking about the two-dimensional motion in plane. Clear? Okay. Next one. Now see, again we have to find the instantaneous velocity. We already studied what is the equation for instantaneous velocity. Yes, it is the dv upon dt. Correct? What is the equation? Sorry, d r bar upon dt. So next कैसे राइट कर सकते हैं बोलो? That is dx upon dt into I cap, that is in the x direction, plus dy upon dt into j cap. This is the instantaneous velocity equation. Correct? फिर ये क्या होगा? V instantaneous in x, V instantaneous in y. So magnitude क्या होगा बोलो first? What is the magnitude? V instantaneous is equal to, yes, dx by dt bracket square plus dy by dt bracket square. Easy है बच्चों. Correct? Direction क्या होगा बोलो? Tan theta is equal to dy upon dt upon dx upon dt. That is the coefficient of j upon coefficient of I cap. Clear? ठीक है. Next. Now see average acceleration. What is the formula to calculate the average acceleration? Yes, it is the what? Delta v bar upon delta t. So for the two-dimensional motion, how we can write? Yes, v2x minus v1x upon t2 minus t1 into I cap plus v2y minus v1y upon t2 minus t1 into j cap. And what is this? It is average acceleration in x,
average acceleration in y. So again we can write A average in x plus I cap plus A average in y into j cap. So आपको समझ में आ रहा है बच्चों, इजी है. So यहाँ पे क्या लिखोगे आप, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रूट ऑफ, बोलो. So now see there is a way to write this. यहाँ पे क्या आ जाएगा, A average in x bracket square plus A average in y का bracket square. Correct? And what is the dimension? Sorry, direction. Tan theta is equal to A average in y direction upon A average in x direction. Correct? समझ में आ रहा है? Now see, तो instantaneous क्या होगा, फटाफट बोलो. What is the formula to calculate the instantaneous? It is the dv bar upon dt. So we can write, correct, dvx upon dt into I cap plus dv bar upon dt into j cap. Or we know that double derivative of displacement gives acceleration. So we can also write the what, d square x upon dt square plus d square pi upon dt square into j cap. This is the formula to calculate the instantaneous acceleration. And now what is the magnitude? So magnitude of instantaneous acceleration is equal to root of dvx upon dt bracket square plus dv by upon dt bracket square. Or you can also write root of d square x by dt square plus d square y by dt square का square. And finally what is the angle, tan theta, direction dv by upon dt upon dvx upon dt. So is it clear? So all these are the formulas regarding the what, average velocity, instantaneous velocity, average acceleration, instantaneous acceleration when the object is moves in a two-dimensional or motion in a plane. The most important, projectile motion. So what is a projectile? When any object is propelled under the application of external force under the gravity and the air resistance, that is called the what, projectile motion under gravity. Now see, so basically we know that this is the A point, represents the point of projection. यहाँ से projectile throw किया, so it makes angle theta with the horizontal. Initial velocity makes an angle theta with the horizontal. So initial velocity is what, u. It is divided into two components along the horizontal, u cos theta, along the y direction, u sin theta. Now projectile बढ़ रहा है, so ये velocity continuously change होगा. ये same नहीं रहेगा ना, एक same रहता है. कौन सा? Horizontal component velocity q, because in the horizontal direction there is no acceleration. In the vertical direction there is acceleration, which is that acceleration due to gravity acting on the body. Because of acceleration there is a change in velocity, but in horizontal direction there is no change in velocity because acceleration is zero. So कौन से भी point पे जाओ horizontal, आपको क्या मिलेगा compulsory, u cos theta, u cos theta, u cos theta. अरे correct, ठीक है. Now during this journey, this is called the what? This path followed by the projectile is called the trajectory. It is called the what? Trajectory. The maximum horizontal distance covered by the projectile during its journey is called the range of the projectile. That is from the point of projection to end. This is called the range r. Second, the maximum height achieved by the projectile is called the what? H max. Are you correct? During this total journey, time required is called the time of flight. Correct? It is again, if the path is symmetrical, it divided into two paths from point of projection, initial point to maximum height. This one is called the time of ascent. Then from the maximum height position to the end, it's called the time of descent. Time of ascent, time of descent. So now see, यहाँ पे we can write the important parts. Velocity. So you know that from the diagram, ux is what? U cos theta. Initial uy is equal to u sin theta. Theta is called the angle of projection. Correct? Next, acceleration. So we already told acceleration in x direction is 0 and acceleration in y direction is acceleration due to gravity, that is minus g.
Okay, next displacement. Now displacement is a what? If I am talking about the displacement in x direction, displacement is a velocity into time. So velocity in x direction is constant. So u cos theta into time. After what time you need to calculate? Then displacement in y direction is calculated by using the kinematic equation, because in vertical direction acceleration is constant. So it is what? Ut minus half at square. So in vertical direction initial component is what? U sin theta into t, ut minus half acceleration g t square. Correct? So this is direction of motion, means what? After certain time आपको कहा बाबा यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, थीटा थोड़ी कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है. सपोज मैंने कहा यहाँ पे कोई तो कंपोनेंट है velocity in y direction and this is the velocity in x direction. So ये एंगल आपको कुछ भी दिया होगा अल्फा निकालो after certain time t. So क्या होगा? Direction, that is tan of theta is equal to vertical component of velocity after time t upon horizontal component of velocity after time t, vy upon vx after that given time. Magnitude. So we know that magnitude कैसे फाइंड करेंगे बोलो? So magnitude of velocity is equal to, अभी हमने देखा vx square plus vy square after that time. Any doubt? Diagram भी समझ में आ गया? Is it clear? ठीक है. Now next. So most important formula. First formula आता है time of flight. तो क्या होता है? Time of flight is equal to 2u sin theta upon g. U is the initial velocity of projection. Theta is the angle of projection. I already discussed time of ascent and time of descent. So time of ascent is u sin theta upon g and time of descent also होता है u sin theta upon g, because total time of flight होता है time of ascent plus time of descent, which is 2u sin theta by g. Okay? Okay. Next. Then maximum height achieved by the projectile during its journey, that is h max. What is h max? It is a u square sin a square theta upon twice of g. Correct? Next, यहाँ पे one condition होती है, if the projectile is thrown vertically, then the maximum height. So vertically means what? Theta कितना होगा? 90 degree होगा, because angle is made with respect to horizontal. So for completely exactly vertical फेंक रहा हूँ मतलब angle 90. So h max कितना होगा? H max is equal to u square 2 theta sin 90 is 1. Is it clear? ठीक है. Next condition, horizontal range. What is the formula to calculate the horizontal range? R is equal to u square sin 2 theta upon g. और आपको मालूम है expansion is what? 2u square sin theta. Sin 2 theta is what? 2 sin theta cos theta upon g. Okay, the maximum range you already derive with the what? Syllabus. Maximum range कब मिलता है? When the angle of projection is 45 degree. Means if you substitute in this equation sin 2 into 45 sin 90 is 1. So you get the maximum range is equal to u square by g. It is what? U square by g. Is it clear? Any doubt? Next. Now the equation of trajectory of projectile motion means what? आपने देखा बाबा कि आपको मालूम है जैसे ग्राफ में देखते हो y is depend on x, projectile आगे बढ़ रहा है, so there is a what relation between x and y is represented by the equation that is called the equation of trajectory. क्या होता है equation of trajectory? Now see, equation is y is equal to x tan theta minus g x square upon 2 u square cos square theta. Is it clear? Means you can represent this equation y is equal to ax minus bx square. और एक इक्वेशन है जो बहुत शॉर्टकट काम आता है कभी कभी, that is y is equal to x tan theta in bracket 1 minus ax by r in terms of range of the projectile. Correct? So this is the equation of all these three represent the equation of trajectory, and we know that from these, this is the equation of the parabola, hence the projectile follows the path
is what? Parabola. Correct? Next, note. So what is the note? Now see, there is one condition which is important. If two projectiles are thrown at an angle theta 1 and theta 2, and if theta 1 plus theta 2 is equal to 90 degree, means that two angle of projections are complementary, then most important, their ranges are equal. So range of the first projectile is equal to range of the second projectile. Is it clear? Okay. Then remember this equation, all are important. क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है? Next. The uniform circular motion. What is the uniform circular motion? The motion of an object along the circumference of circle with constant speed. ठीक है? So what is the speed? Generally we know that speed is equal to distance upon time. So एक revolution मैंने complete किया. Correct? तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? सर्कमफरेंस इतना. मतलब क्या होगा रे? टाइम पीरियड t यानी 2 pi r upon t for one revolution. Correct? Then what is the period t? यहाँ से इक्वेशन, दूसरा कुछ नहीं. t क्या होगा? 2 pi r upon v. t क्या होगा? 1 upon f होगा. That is the time period. क्या होता है? Time required to complete the one revolution. The next angular speed आपको मालूम है. Angular speed क्या होगा रे? 2 pi by t होगा, 2 pi by f होगा, नहीं तो v by r होगा. v is equal to r होगा. Correct? Centripetal acceleration. बोलो. So जो भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, there are the two components of acceleration. One is centripetal component of acceleration, दूसरा tangential acceleration. Centripetal acceleration is responsible to change the direction of the particle, and tangential acceleration is responsible to change the speed of an object. Correct? So centripetal acceleration का फॉर्मूला क्या है? मैं मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ, डायरेक्शन में नहीं. एक्चुअली डायरेक्शन इज टूवर्ड्स. तो क्या होता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? v स्क्वायर बाय r, r ओमेगा स्क्वायर, v ओमेगा. मैं बात कर रहा हूँ ओनली मैग्नीट्यूड की. बाय डायरेक्शन करे तो ये माइनस आएंगे सब. क्यों? बिकॉज पोजीशन वेक्टर कहां जाता है बच्चों? पोजीशन वेक्टर पार्टिकल की पोजीशन रिप्रेजेंट करता है. r बार यहां चला जाता है. सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहां आता है? टुवर्ड्स द सेंटर. सो अपोजिट डायरेक्शन. सो यहां पे माइनस आता है एक्चुअल में बाय डायरेक्शन. बाय मैग्नीट्यूड दीस आर द फॉर्मूला. इज इट क्लियर? एनी डाउट? नहीं. नेक्स्ट. एंड वहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट नोट डाउन करो बच्चों. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसा एक्ट होता है? It may be in the direction of velocity or opposite to direction of velocity, but always tangential to the path. Correct? So tangential का फॉर्मूला क्या? It is the r alpha. और जो आप कैलकुलेट करते हो ना बच्चों, dv by dt, वो क्या देता है? It gives the actual what? Tangential acceleration. Are you correct? तो tangential acceleration का फॉर्मूला क्या? r alpha. Is it clear? ठीक है. So most important thing for uniform circular motion. In uniform circular motion, tangential acceleration कितना होता है? 0. Because speed कैसा होता है? Constant. और constant का डेरिवेटिव. Is it clear? So यहाँ पे UCM में कौन प्रेजेंट होगा? खाली AC. और वही किसके बराबर होगा? Resultant acceleration के बराबर होगा. और always remember, both the accelerations are perpendicular to each other. Centripetal and tangential are, मतलब उनके बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री. Is it clear? अगर वही बात करूं बच्चों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉन यूसीएम की क्वेश्चन आता है. So नॉन यूसीएम में always remember AC भी होता है, AT भी होता है. So जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होता है वो होता है AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर. आगे होता है आपको मालूम है A स्क्वायर प्लस T स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. लेकिन एंगल 90, cos 90 becomes 0. So important points. Any doubt? So this is about the uniform circular motion. Next, centripetal force, centrifugal force. आपको मालूम है centripetal force is a force
acting along the radius towards the center. Centrifugal force is acting along the radius away from the center. दोनों में खाली मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, खाली डायरेक्शन अपोजिट. तो आपको मालूम है जनरली फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. नाउ यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला mv²/r, यहाँ पे कौन आएगा? वेक्टर. अरे करेक्ट. दूसरा कौन आएगा? mr ओमेगा² आएगा कौन? वेक्टर. नहीं तो व्हाट? mv ओमेगा. अरे करेक्ट. तो यहाँ पे बच्चों बाय ये लिखो साइन, तो ये क्या आता है? माइनस. क्यों माइनस आता है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन. बिकॉज डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर एंड द एक्सेलरेशन इज अपोजिट. तो यहाँ पे खाली सब फॉर्मूले सेम बच्चों, खाली क्या होगा? साइन प्लस होंगे. Fr is equal to mfr is equal to mv²/r is equal to mr ओमेगा² is equal to mv ओमेगा. अरे आए समझ में? So both are same. Centrifugal force is also called pseudo force, which is a imaginary force which is experienced in the frame of reference. Is it clear? Any doubt? So this is about the quick formula revision. एक conical pendulum, right? Conical pendulum क्या होता है? There is a what? Heavy mass which is called the bob is attached to the massless long inextensible string and rotated in the horizontal plane. Then it forms a what? Right circular cone at the support. So that is called the conical pendulum. So diagram मैंने already दिया है. So this is the heavy mass which is attached here. They rotate in the horizontal circular plane. So for force analysis, it's where it is acting in the downward direction mg. Then this is the string. So tension comes into the string which is acting towards the support. So angle theta is the angle made by the what? Pendulum with the what? Vertical. Correct? So theta, so t is the incline, so divided into two components. One is along t0 cos theta, t0 sin theta. Weight is balanced by t0 cos theta. So this is the first equation. Vertical direction. आपको मालूम है? Net force towards the center is balanced by centripetal force. So towards the center कौन आ रहा है? t0 sin theta, which is balanced by the centripetal force mv²/r. तो पहला फॉर्मूला आता है लीनियर वेलोसिटी का. क्या होता है फॉर्मूला? v is equal to root of rg tan theta. Period of revolution is what? t is equal to 2 pi root of h by g, 2 pi root of l cos theta by g, 2 pi root of r upon g tan theta. तो इक्वेशन कौन से भी टर्म में लग सकता है आपको, तो तीनों भी फॉर्म पता होने चाहिए. फ्रीक्वेंसी सीधा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. सो तीनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे? 1 upon 2 pi root of g by h, 1 upon 2 pi root of g upon l cos theta, 1 upon 2 pi root of g tan theta by r. So any doubt? This is all about the what? Simple thing. So यहाँ पे one more चीज, ये right angle triangle ध्यान में रखो बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है. Now see, this is the what? Radius of circular motion. So यहाँ से ये आता है. This one is a what? क्या एंगल होता है? थीटा. This is the length of string. This one is the what? Height. Is it clear? Any doubt? So this is about the what? Conical pendulum. So clear? So any doubt? Okay. तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर.